आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त मौजूद है और उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल कल बहरीन पहुंचा, जिसमें फायर ब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं और ओवैसी ने बहरीन में पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। पाकिस्तान आतंकी संगठन आईएसआईएस जैसा ओवैसी का यह कहना है। ओवैसी ने कहा यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। आतंकियों ने कुरान को गलत ढंग से पेश किया। इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। ओवैसी का कहना है एक बेगुनाह का कत्ल पूरी मानवता को मारने जैसा। असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुना देते हैं। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it because they have used religion to justify killing of people, and the whole world knows that Islam has condemned terrorism. The Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. This one must remember. ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब करने में और उसे वार्निंग देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान अब दुस्साहस की सोचे भी मत। भारतीयों की सब्र की भी एक सीमा है। अगर कुछ किया तो जो होगा वो सोच से परे होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दी है। इंडिया हैज ऑल द wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians but anyone who lives in India, because if you see on the 9th or 10th of May when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened. Technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. Our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. ओवैसी ने पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के साथ साथ दुनिया से एक बड़ी अपील की और वो अपील ये थी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए ताकि आतंकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो जाए। Fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. Now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists, and we had bombed those 9 terrorist sites. How is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. Inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon.